It's one of India's holiest cities, one of the 4 sacred places where the Kumbh Mela takes place. India's second longest river, the Godavari, originates here. It's here where Hindus immerse ashes and pray for the dead. It's also home to Asia's biggest onion market and produces 90% of India's wines. For 75 days, the Sanjeevani ki gaadi on the road, travelling to remote villages and covering over 5,000 kilometers. Network 18 and Federal Bank's vaccine awareness campaign against COVID-19, Sanjeevani, a shot of life, now in the district of Nashik in Maharashtra. The monsoon is relentless in Nashik district. The Sahyadri is enveloped in thick fog. And then suddenly visibility drops to 0. People, animals are barely visible, but the landscape is breathtakingly beautiful. The Western Ghats, lush green, stunning and peaceful. Tharngaon, 50 kilometers south of Nashik city. Life back to near normal in this quiet village. Schools have restarted and the markets running once again. The perfect time for the Sanjeevani team to hit the ground to spread vaccine awareness. Our social workers requesting citizens to be vigilant and to follow COVID-appropriate behavior. Registration details for vaccines are also taken from vaccine-eager individuals. And most importantly, the door-to-door drive allowing people to ask questions and clear doubts to dispel myths and hesitancy. पहिला डोस घेतलाय आणि करोना झाला तरी तो कमी प्रमाणात राहतो आणि जगू शकतो माणूस. काळजी घेणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर आपल्या लसीकरण केंद्रामध्ये At the village square, Sanjeevani social workers are creating mass vaccine awareness with a larger group of people. Pamphlets with the latest information on vaccines and the vaccination process were also shared with villagers. A coronavirus mascot is a constant reminder that the pandemic is not over and it's imperative to get vaccinated. And reaching their hearts through the Sanjeevani anthem. Actor Sonu Sood has been urging the public to get vaccinated and to be safe. हमारे गांव में संजीवनी कैंपेन के लोग आए और उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को समझाया. उनकी वजह से हमको कोरोना वैक्सीनेशन करवाना बहुत आसान हो गया. और हम जो फील्ड में काम करते हैं, एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और हमारी टीम, इस संजीवनी कैंपेन के लोग आने से हमको बहुत सा फायदा और लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए तैयार हो गए. Tharngaon saw 18 deaths in the second wave. The good news is that nearly 60% of the village has taken their first dose. But many more need to be convinced. संजीवनी कैंपेन के लोग जो आप हमारे यहाँ आए, इसकी वजह से जो हमारे यहाँ ठाकर और कोली समाज जो टीकाकरण के लिए एग्री नहीं थे, वो अभी आपकी वजह से एग्री हो गए हैं. और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो समझाया उनको, ये बहुत अच्छी तरह से काम किया. आपका मैं हमारे गांव की तरफ से शुक्रगुजार हूँ. धन्यवाद. Over 4 lakh people got infected with COVID-19 in Nashik. Until date, 8,500 people have died of the deadly disease, the 5th highest district in Maharashtra. It also has a worrying case fatality ratio of 2.2%. And death also visited the Sadgir family. Just a few months ago, it was a happy household. Their home is a few kilometers away from Jategaon village. The family was unscathed during the first wave. Then in late March this year, Navnath's mother went for a wedding. हमारे मम्मी शादी में जाके आए, उनको कोरोना हो गया. उससे वजह से हमारे 7 लोगों को कोरोना हो गया. Out of 11 family members, 7 got infected with COVID-19, including her husband Eknath, who was serious but survived. हमारे मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए. वो 15 दिन में
डेथ हो गई। हमारे भाई को एडमिट किया, वो 35 दिन में था हॉस्पिटल में, वो भी डेथ हो गया। 2 deaths in 2 weeks to COVID-19 in a single family. Yerabai was 55 years old. Her elder son, Dhyaneshwar, was just 33, leaving behind a widow and 2 children. Moreover, the hospital bills have left them with a huge debt. हमारे भाई के टोटल खर्चा 15 लाख रुपया गया। सब दवाई बाहर से लेके गए थे, रेमडेसिविर, टॉसली और 2 प्लाज्मा किया था, उससे कुछ फ़र्क ही पड़ा नहीं। डॉक्टर बोल रहे थे वो ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ हो गया नहीं। बाद में उनको बोल दिया कि हमको तुम्हारे भाई डेथ हो गए। माझ्या सासूबाई पण गेल्या आणि माझे पती पण गेले। हे असं काही होऊ नये, पण हे असं घडले, हे असं कधीच घडू नये, पण हे असं होतंय। हे लसीकरण निघाले ना, हे सगळ्यांना पण घ्यावा असं माझं हे वाटतंय। हे संकट माझ्यावर आले ना, असं कोणाला पण येऊ नये। माझे लहान लहान लेकरे आणि ते कसे सांभाळायचे आणि कसं शिकवायचं, हे संकट लई मोठं आले, पण आता ते कसं तरी दूर करायला लागल। हे माझे संकट आले ना, असं कोणालाच येऊ नये, एवढीच माझी इच्छा आहे। In the same village a few kilometers away happened a similar story of grief and loneliness. Parents are too old to work. Her only option is to toil as a farm laborer. त्या टायमाला लसच नव्हती, 50-60च्या पुढे लस होती त्या टायमाला। 3 deaths in the same village reveal a common theme. None of them had got vaccinated. देवकी, आपने क्या टीका लिया है, वैक्सीन? नहीं लिया। अच्छा, क्यों नहीं लिया? मेरे को डर लग रहा है इसलिए। डर लगता है? हाँ। किस बात का? ते आजारी होऊन जातं म्हणून, आप थंडी ताप येतं म्हणून। समझा देंगे उनको भी क्या फ़ायदा क्या है वैक्सीन लेने का? ओके, काय आहे ना ताई, वॅक्सिन घेतल्याने तुम्हाला एक तर तुमच्या आरोग्यास काहीच त्याचं होत नाही। जर तुम्हाला वाटतं की आपण असं मला वाटतं की आजारी होतं माणूस। हा होत, आता काय आहे, गोळी असते एखादी, तिने थोडंसं कधी कधी गोळी विना जेवणाची घेतली तर ती लागते, पण त्रास होतो। तर गोळी शेवटी ती थोडाफार त्रास होतो, नॉर्मल ताप येतो किंवा मग थोडा अशक्तपणा जाणवतो, पण नंतर व्यवस्थित होतं। And we are determined to convince her by talking and urging her. Another avoidable death has to be stopped. अभी आप क्या लेंगे? चलेगा, ले लेंगे? हाँ, कब लेंगे? उद्या घेऊन टाकल। कल, ओके, ठीक है। सर्दी खांसी भी हो तो भी ये हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करेंगे, और उसमें में लस लेना इनके लिए मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है भरोसा कर पाना। लेकिन क्या हम जैसे अगर कोई आए, इनको समझाए कि कितना फ़ायदेमंद है, क्या है, थोड़ा सा कुछ बताइए, हमने खुद लिए इस तरह से कुछ कर पाए, तो ये हम पे भरोसा रखते हैं। मतलब इनको कोई श्योरिटी देने वाला हो तो ये हम पे भरोसा कर लेते हैं। The next morning it's Adivasi Divas, or the International Day of the world's indigenous people. We chose this day to honor their trust in Sanjeevani. Members of both families are taken by bus to the nearest vaccination center to ensure they get their shot of life. Very often we have seen that beneficiaries are willing to get vaccinated, but they drop off because they find it too expensive to hire vehicles and come to vaccination centers. And that's exactly where the Sanjeevani campaign comes in, with this bus service, where we take the responsibility of transporting or ferrying them from their villages to vaccination centers at no cost. At the primary health center, beneficiaries maintain physical distance as they wait for their turn. And then, a surprise. A rapid antigen test is done on every person who is willing to get vaccinated, something never observed anywhere else. लोगों के मन में रहता है कि मैंने वैक्सीन लिया और बाद में मेरा कंडीशन ऐसा होगा और मैं पॉजिटिव हो गया, मैं सीरियस हो गया। ये भी जो उनका गैर समझ रहता है वो दूर करने के लिए हम एंटीजन टेस्ट का ज़रूर हेल्प लेते हैं, और उससे उनका अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए हम कोशिश करते हैं। The negative results did clear all doubts of both the beneficiaries and the doctors. They are then registered on the CoWIN portal. And then one by one, they all get vaccinated.
Sunita, Navnath and his wife, and Devki. All of them are protected by a COVID vaccine at this drive organized by the Sanjeevani campaign. आम्ही संजीवनी बसमधून येथे आलेलो आहे लस घ्यायला. पहिल्यांदाच घेतोय आम्ही ही लस. आम्हाला ही लस घेतलेली आहे. आम्हाला खूप आनंद झाला आहे. माझे पती गमावले, ते स्वर्गात गेले. त्यांना पण खूप आनंद होईल व लस घेतलेली आम्ही. कोविडची लस मी पहिल्यांदाच घेतली. इंजेक्शन मला घ्यायचं नव्हतं, भीती वाटली, पण संजीवनी बसमधून मी आली. त्यांनी सगळ्यांनी समजून सांगितलं चांगलं आहे ते घेऊन टाक, काही त्रास होत नाही. मी घेतलं आहे. माझं मिस्टर कोरोनाने जरा वारले आता, त्यामुळे मी इंजेक्शन घेतलं आहे. Each is then given paracetamol in case they get a high fever. And importantly, they are all explained by doctors on the post-vaccination protocol. लोगों की अफवाहें थी कि ये वैक्सीन लेने के बाद 1.5 साल के बाद डेथ हो जाती है, और ऐसा सुना था मैंने, तो इसके लिए आज तक नहीं लिया था. अभी जबकि मेरे डाउट क्लियर हो गए, सो अभी वैक्सीन लिया मैंने और ये सेफ है. हमारे गांव में बहुत सारे लोगों को कोरोना हो चुका है, कोई लोग गुजर गए हैं, लेकिन ये डोज लेना ज़रूरी है, टीका करना ज़रूरी है. यानी मैंने संजीवनी वजह से ये डोज लिया है, कोरोना से आदमी बच सकते हैं. While the vaccines are given by the state government, the special vaccination drive is organized by the Sanjeevani campaign. Our social workers first changed the minds of those who were vaccine hesitant. Then they registered and mobilized those keen to get the jab, and finally transported them to the vaccination center. संजीवनी के इतने अच्छे प्रोग्राम के कारण हमारे यहाँ आके उन्होंने सब लोगों को बताया कि नहीं, हम संजीवनी ने उनका जो भ्रम था वो निकाला, और उसकी वजह से बहुत सारी भीड़ हो गई और इधर सब लसीकरण बहुत अच्छी तरह हो गया. तो संजीवनी जो कैंपेन है उसके सब साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस दुर्गम एरिया में और जहाँ पे लाइट का, पानी का और रास्ते का सब प्रॉब्लम्स हमेशा रहता है, वहाँ तक आके उन्होंने जो हेल्प करने की कोशिश की और अच्छी तरह से हेल्प किया है. संजीवनी प्रोजेक्ट के अंदर 200 गांव में से हम ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं. तो हर गांव में से 60 लोगों को हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं. तो कुल मिला के 12,000 लोगों को हम ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं. नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की तरफ से संजीवनी वैन और ये जो मुहिम चलाई जा रही है, इसकी मैं काफ़ी सराहना करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ कि हमारा जाते गाँव एक ट्राइबल पॉपुलेशन का, आदिवासी वाड़ी बस्ती का ये विलेज है, और यहाँ के जो क्लस्टर विलेजेस है वो भी रिमोट प्लेसेस पे. ऐसा रिमोट प्लेस जहाँ पे आप लोग आके ये वैन के माध्यम से, नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के माध्यम से जो अवेयरनेस कर रहे, उसके चलते ये जो टीकाकरण मुहिम है ये वो और सहज और सफल होने में काफ़ी मदद होगी. বিস্তাৰ কৰা ঘৰচিৰিকা চৰাই ক্ৰমান্বয়ে হেৰাই গৈছিল খেৰীঘৰৰ ঠাইত কংক্ৰিটৰ ঘৰ নিৰ্মাণৰ ফলত. বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে জাকে জাকে ঘৰচিৰিকা চৰাই জনাঞ্চলত দেখাটো অতি বিৰল যদিও গহপুৰ নগৰত বৰ্তমান এই দৃশ্য সুলভ হৈ পৰিছে. এই বকুল গছজোপাত ঘনচিৰিকাই বাঁহ লোৱা 3 মাহমান হ'ল, আৰু ইয়াত সন্ধিয়া আহে, ৰাতিপুৱা গুচি যায়. আছে 600-700 মান সদায় আহে. কাকো আমি অনিষ্ট কৰিবলৈ দিয়া নাই, কোনো এটাও একো অপকাৰ কৰা নাই. ইয়াতে আহে আৰু সন্ধিয়া আশ্ৰয় লয় আৰু ৰাতিপুৱা গুচি যায়. বৰ ধুনীয়া লাগে. হতাব্যস্ত গহপুৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা বকুল গছজোপাত সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা ঘৰচিৰিকা চৰাইবোৰে পুৱা হ'লেই ওলাই যায় খাদ্যৰ সন্ধানত. অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থান চৌহদৰ ব্যৱসায়ীসকলে ঘৰচিৰিকা চৰাইজাকৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে. কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যাতে ঘৰচিৰিকা চৰাইসমূহৰ অনিষ্ট সাধন কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্ৰদান কৰি আহিছে এই ব্যৱসায়ীসকলে. গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, News 18 Assam Northeast. निर्माण पावर स्वैग चल शुरू हो जा माइथन करते सब कुछ ऑन
on track. Strong hai Maithan, flexible Maithan, bada samajhdar. Nirmanor Mandondo. Maithan. দৰঙী কলাকৃষ্টিৰ আপুৰুগীয়া সম্পদ ব্যাসৰ ওজাপালিৰ এখন এদিনীয়া কৰ্মশালা ঐতিহাসিক খতৰা সত্ৰৰ অতিথিশালাত অনুষ্ঠিত হয়। 1974 চনতে স্থাপিত দৰঙী কলাকৃষ্টি উন্নয়ন সংঘৰ উদ্যোগত আৰু খতৰা সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত এই ব্যাস সংগীতৰ কৰ্মশালাৰ পাৰদৰ্শী ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকি লোকচিন্তাবিদ চিপাঝাৰ জনতা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ হৰেণ ডেকাই পুংখানুপুংখ পৰ্যালোচনাৰ জৰিয়তে ব্যাস সংগীত পৰিৱেশনৰ ক্ষেত্ৰত হস্তচালন, মুদ্ৰচালন, ৰাগ, তাল আদি ব্যৱহাৰৰ ওপৰত ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে। আজি খতৰা সত্ৰৰ অতিথিশালাৰ দৰঙৰ অন্যতম ঐতিহ্যমণ্ডিত লোককৃষ্টি ব্যাস সংগীতৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছে। দৰঙী কলাকৃষ্টি উন্নয়ন সংঘই ব্যাস সংগীতৰ এই কৰ্মশালাখন আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ কৰ্মশালাখন আয়োজন কৰাৰ উদ্দেশ্য হ'ল কি, দৰঙৰ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত লোককৃষ্টিখিনি কেনেকৈ শুদ্ধ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি, কেনেকৈ শুদ্ধ ৰূপত ইয়াক প্ৰচাৰ কৰিব পাৰি, সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি, কেনেকৈ গৱেষণা কৰিব পাৰি, আৰু ইয়াৰ যিবিলাক হেৰাই গৈছে, যিবিলাক ৰাগ ৰাগিনীবিলাক বা সেইবিলাক শুদ্ধ ৰূপত আনি আমি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰি সংৰক্ষণ কৰি ইয়াক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খুজিছোঁ। আৰু ইয়াক আমি ঐতিহ্যমণ্ডিত লোককৃষ্টিখিনি আমি ৰাষ্ট্ৰীয় লেভেলত প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণেও আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। আমাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে। কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে কি ধৰণে শুদ্ধ ৰূপত ব্যাসৰ ওজাপালি পৰিৱেশন কৰিব পাৰি, শুদ্ধ ৰূপত কেনেদৰে প্ৰচাৰ কৰিব পাৰি, শুদ্ধ ৰূপত কিদৰে গৱেষণা কৰিব পাৰি, হেৰাই যাব ধৰা ৰাগ ৰাগিনীবিলাক শুদ্ধ ৰূপত কিদৰে Asha workers are out on duty in the remote village of Thanapada, close to the border of Gujarat. The health workers are traversing forests, crossing streams, and walking several kilometers to reach patients, especially those who are infected by COVID-19. Dada, oh Dada, dhokle ki kya? Ami tumhara dhokle lage. Sangeeta Bhoye is an Asha supervisor with a team of 12 Asha workers, and her work on the ground is admired and excellent. Not just providing medical attention but also giving food, provisions, eggs and vegetables to coronavirus patients. आणि आमच्या जवळ कोणी माणसं आम्हाला मदतीला येत नसते, तेव्हा आमच्या आशाताई आमच्या मदतीला आल्या आणि आम्हाला खाद्यपदार्थ कसे खायचे हे ते सगळं माहिती देत होते. आणि आमच्या सोबत इतरांना बऱ्याच लोकांना त्यांनी अशीच मदत केली. And going beyond the call of duty makes her a Sanjeevani champion. She purchased the rations from her salary of just 8,000 rupees, of which 2,000 rupees she says she would spend on COVID-19 patients. जब कोविड हुआ था उनके पास कोई जाता नहीं था, उनको घर में खाने के लिए रेशन कभी रहता तो मैं अपने पैसे से उनको रेशन खरीद के देती थी. उनको सब्जियाँ वगैरह ऐसे जो चीज़ें वो सब मैं उनके घर पर पहुंचा किया करती थी. उनका दर्द मुझसे नहीं देखा जा रहा था, इसलिए मैंने अपने पैसों से खरीद कर उनको सब पुराया. Sangeeta recalls how tough it was when the pandemic started in January 2020. Information was already sketchy, and with poor mobile connectivity, it became even more challenging. कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा था, कोई अगर किसी को देखो तो रास्ता बदल के जाने का, ऐसा सब माहौल था. उस टाइम हमारे आशा वर्कर्स और हमने हर एक के घर में जाकर उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया और उनका टेम्परेचर लिया. Sangeeta and her team of Asha workers are the government's frontline health workers in villages. They are responsible for a population of nearly 11,000 people, largely uneducated Adivasis. With hardly any awareness, stigma spread fast in the region.
हमारे घर में तो बोले तो लोगों को कोरोना का बहुत ही डर था, इसलिए हमारे घर के लोग भी, हम जब सर्वे को जाते थे उसके बाद आने के बाद बोलते थे आप बाहर रहो, बोले तो खाना अलग से देने का, अलग से रहने का, कोई नज़दीक नहीं आने का, जल्दी से वो काम कर रही है तो कोविड पेशेंट के साथ उनके घर पर जा रही है, ऐसे सब घर में था हमारे. But they all continued working, serving the people, and for that they are our Sanjeevani champions. But Sangeeta's team also suffered a loss. 32-year-old Renuka Gotarne is an ASHA worker for over a decade. Sweet-natured and soft-spoken, but COVID-19 snatched away the person she was closest to, her 48-year-old mother, Jijabai. In February, both her parents tested positive for coronavirus. She suspects that they caught the virus when they went to a Nashik hospital for Jijabai's kidney stone treatment. Both husband and wife did recover from the infectious disease, but Jijabai, who had high blood pressure and diabetes, died after 2 months. She had been compromised because she was not vaccinated. टीका नहीं उसने करवाया, वो बोली कि टीका करवाने के बाद डेट हो जाती है, ऐसे वो घबराती थी टीका कराने के लिए कि जो आदमी पहले से बीमार है उसने टीका नहीं लेना चाहिए था, इसलिए. It wasn't the case that Jijabai did not have enough information. Her daughter, an ASHA worker, had counselled her many times, begging her to get vaccinated. But fear had overwhelmed her. मैंने उसे बोला था कि मैंने भी 2 वैक्सीन लिए, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी कुछ नहीं हो जाएगा. तो बोले कि मुझे बीपी शुगर है, मुझे हो जाएगा ऐसा, इसलिए उसने वैक्सीन नहीं लिया था. मला जायचं होतं लस घ्यायला, मला तिने जाऊन नाही दिलं का तू नको जाऊ, कारण कसं म्हणजे लोकांचं ऐकायला मिळतं ना, लस घेतल्यावर असं होतंय बघ, मग तिने मला सुद्धा नाही जाऊन दिलं, आजपर्यंत नाही गेलो. Jijabai now no more, but it's those living who survive with the guilt. अफसोस तो है कि हम माँ को नहीं बचा पाए तो लोगों का क्या बोलेंगे, इस वजह से मैं 1 महीना काम पे गई नहीं. ये बहुत ही दर्द भरी कहानी है. आशा वर्कर ने उनके माँ को बहुत समझाया था कि वैक्सीन ले ले, वैक्सीन के जो फ़ायदे हैं वो भी समझाए थे. और आशा वर्कर खुद को ऐसे मानते हैं कि उनके वजह से ऐसा हुआ है क्योंकि वो समझाने में थोड़ा सफल रही है. लेकिन ये सब जो घटना हुई है वो लसीकरण, वो वैक्सीन न लेने के कारण ही हुई है सर. अगर ये 2 डोज अगर ले लेते तो ऐसी घटना टल सकती थी. जो हमारे घर में हुआ बाकी और घर के लोगों को नहीं होना चाहिए ऐसा, इसलिए वैक्सीन लगानी ज़रूरी है. जो लोग वैक्सीन जिन्होंने लिया नहीं, वो हमारी कृपा है कि वो वैक्सीन ज़रूर ले. It's a sight that would send shivers down a health worker's spine. At a bank in Thanapada, massive crowds surround the building. No masks, no social distancing. It's almost as if people believe the pandemic is over. तुम्ही मास्क काय नाही घातला? मास्क आहे ना. आहे ना मास्क. कुठे आहे मास्क? कुठे आहे? काय दिसत मला. करोना गेले काय? तुम्ही मास्क काय नाही घातला? नाही ना आणलं. कुठे आहे मास्क? कुठे आहे? घरीच. आणि तुमचा मास्क कुठे आहे? मास्क कुठे आहे? तुमचा मास्क कुठे आहे? करोना गेले काय? करोना गेले. संजीवनी प्रकल्पाअंतर्गत कोरोना लसीकरण जाणीव जागृती विषयक फिल्म दाखवली जाणार आहे. And that's exactly why Sanjeevani persists with awareness drives, to remind people that the second wave took many, many lives. And India could soon be at the doorstep of a third wave. And street plays come in handy as they are easy to understand. हो घाबरतात, म्हणतात आम्हाला आजार होईल, आम्ही जगावं पुढे, त्याच्यामुळे लस घेत नाहीत लोक. पण आम्ही खूप सांगतो ना, लस घ्या. काही लोक घाबरतात. ते बऱ्यापैकी लसीकरण झालेलं आहे आमच्या इथे, 2-4 वेळेस झालेलं आहे. And to further convey our message, the Sanjeevani anthem in Marathi. लोगों को तो डरना तो नहीं चाहिए, वैक्सीनेशन की तो ज़रूरत है अभी.
लेकिन हमारा जो ट्राइबल आदिवासी एरियाज हमारे यहाँ के लोग वो क्या बोलते, वो साक्षर नहीं है। इधर लोग डरते, तो अभी आपने ये जो संजीवनी संस्था है, ये संस्था ने या टाकित गांव में आके ये चौक में जो अपनी ये जो कार्यक्रम लिया और लोग लसीकरण के लिए वो तैयार हो जाएंगे, ऐसा हमको लगता है। Nashik district has to vaccinate 52 lakh people, of which 28% have taken the first dose and 10% are fully vaccinated. Many more need to be convinced that vaccines do indeed save lives. आप जो अभी 2 महीने से काम कर रहे हैं उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप भी लोगों तक जाके लोगों का बढ़ावा देके वैक्सीनेशन करो, ये जो अच्छा काम करे उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, पूरा नेटवर्क 18 टीम को और फेडरल बैंक जो भी अपना ये संजीवनी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Zara